हाँ। Hello. Should we start, sir? Hello. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anil, sir, should we start? Dr. Anil, should we start? Hello. Okay, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. मैम बोलिए आप आवाज आ रही है It is rightly said that agricultural revolution transformed the earth and changed the fate of humanity. It produced an entirely new mode of subsistence, which remains the foundation of global economy to this day. A very good evening to all of you. Myself, Dr. Akansha Singh, Assistant Professor, College of Agriculture Sciences, Tirthankar Mahavir University, Muradabad, welcomes you all in the orientation program of a 7 days training cum certificate program on novel agricultural systems. We all know that the Indian agriculture has transformed the journey from subsistence to self sufficiency, and now the challenge is to optimize production with efficient utilization of resources using novel agricultural practices. Slowly and slowly, our agriculture sector is inclining towards indoor vertical farming, robotics, usage of drones, automatic tractors, etc., to optimize production using efficient utilization of resources. So the training is designed to cover and highlight all these aspects. So before moving forward, it's our holy tradition to worship our goddess Saraswati before any important event. So it's a request to technical team, please play Saraswati Vandana so that we can proceed further. I would like to request technical team to please play Saraswati Vandana.
Okay. May Goddess Saraswati bless us all. Okay, this training is organized by Hindustan Agricultural and Research Welfare Society along with the collaboration of National Agricultural Higher Education Project and Directorate of Rapeseed Mustard Research. Hindustan Agricultural Research Welfare Society is a non-government autonomous research and educational organization registered under the Societies Act 1860. Society is also registered under Indian Trust Act, Indian Society Act, and MSME Government of India. Now, for the purpose of the training, I would like to invite Ms. Kusum uh, to tell the purpose regarding the training. Ms. Kusum. Good evening to all. I'm Kusum Parswan, Assistant Professor, Tirthankar Mahavir, College of Agriculture Sciences, Moradabad. Well, the purpose of this 7 days training is to sensitize you about the novel agricultural systems. This program will teach you how to use advanced agricultural technologies for increasing the crop production without degrading the environment. A prime example is use of drone technology to collect farm data, making informed decisions for refined fertilizers, sowing, crop and weed management plans, as well as monitoring and maximizing the efficiency of farm water systems. Another such example is indoor vertical farming that allows growers to make best use of limited space, increase food production, and reduce the environmental impact of land farming to expand agricultural operations. As we all know, the global population is projected to reach 8 billion now. Automation in agriculture, which is an emerging subject across the world, you will come to know how AI-powered solutions will not only enable growers to do more with less, it will also improve quality and ensure faster go-to-market for crops. Now, I would like to request Dr. Kansha Singh to take forward the program. Okay, so it's my privilege and honor
to announce that we have with us Dr. J.K. Jina, Deputy Director General, Fisheries Sciences, Dr. J. Kumar, former Vice Chancellor, Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology, Dr. Prabhat Kumar Sir, Commissioner Horticulture, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. He will join us soon. Dr. P.K. Rai, Director of ICR, DRMR, Bharatpur. Dr. Shailesh Kumar Singh, Dean Agriculture, ITM University, Gwalior. Engineer Divakar Singh, Chancellor, Sardar Patel University, Balaghat, Madhya Pradesh. Dr. B.S. Gautam, Chancellor, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Dr. K. Pratapan, Vice Chancellor, D.Y. Patil Agriculture and Technical University, Kolhapur, and Dr. V.N. Prasad, former Head and Professor Horticulture, Shuets, Prayagraj, and other esteemed members in our training. Okay, Dr. J.K. Jina is not well, so I, on the behalf of the whole organizing committee, wishing him the speedy recovery. Now, without wasting much of the time, I would like to invite our first guest of honor, Dr. J. Kumar sir. And before that, I'm going to give a brief description about his profile. Dr. J. Kumar earned his MSc Agriculture and PhD degree from G.V. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, and postdoctoral fellow. He is also the postdoctoral fellow from International Rice Research Institute, Philippines, during the year 1993 and 1996. He served as professor and head Department of Plant Pathology, College of Agriculture, as well as Dean, College of Agriculture, Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology. He was also the Vice Chancellor of Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology. He was the visiting scientist at International Rice Research Institute, Philippines, as well as Cornell University, USA. Dr. Kumar served as principal investigator and coordinator of 21 national and international competitive research projects, including multi-institutional and multi-faculty projects funded by national and international agencies. He published 9 patents out of his research. His contribution have earned him many awards and recognition. Some of the prominent ones are the M.J. Narasimha Academic Merit Award, Jawaharlal Nehru Award, Pesticide India Award, Uttarakhand Ratan Award, Plant Pathology Leadership Award of Indian Phytopathological Society, K.C. Mehta, and Manoranjan Mitra Award. He is also a Rockefeller Foundation, USA Biotechnology Career Fellow. He is also the Fellow of National Academy of Agricultural Sciences, as well as the Fellow of Confederation of Horticulture Association of India and Trustee of Asian Agri History Foundation. Dr. J. Kumar has published more than 120 refereed research papers and reviews in international and national journals. He has guided 25 MSc and PhD students in plant pathology, microbiology, and molecular biology and genetic engineering, of which several students received awards. So I welcome Dr. J. Kumar, sir. Sir, all ears to you. Welcome, sir. Okay, thank you very much. Very good evening, Dr. Akansha Singh. I am humbled by introduction that you gave, and well, I'm really pleased. In fact, I have pleasure, in fact, to be participating in today's this training that you are organizing, and for that matter, I extend my gratitude to Hindustan Agriculture Research Welfare Society, to Dr. Chaudhary, that he invited me to speak to the participants today. It's my pleasure. Very esteemed and very honorable DDG Sahab, Dr. J.K. Jina Sahab. I'm very sorry to know that he's not well, actually, and I wish him very speedy recovery. Dr. Prabhat Kumar, who is the Horticulture Commissioner, Government of India, Dr. P.K. Rai, Director, ICR, DRMR, and Dr. Shailesh Kumar Singh, Dean Agriculture, ITMU Gwalior, and many other dignitaries, many other illustrious
participants to this training, the student participants and faculty participants. Very good evening. I think you gave an introduction to what's going to happen in this training program that will continue for about a week's time or so. You mentioned about what are going to be novel technologies and on which I think you're going to organize this training program. Well, you see, but I think, it's important for all the participants to know and be proud of, in fact, the achievements of Indian agriculture from where we started and where we have reached, in fact, and then enumerate, in fact, the challenges, that are really confronting all of us. What are those? And then, of course, that's the time then to realize or to identify, in fact, the novel tools and technologies, which can address those emerging issues or the emerging challenges. So with this understanding, I thought I shall give you all a brief, I was allotted to about 20 minutes to speak about. So in about 20 minutes, I'll give you a brief account, of course, of the numerous and innumerable technologies or innovation, in fact, that have been made by our Indian agriculture. So, well, dear participants, you all very well know that agriculture remains, in fact, the foundation of the livelihood of the civilization, the culture and heritage of India. No doubt about that. And it's a prime occupation, actually, for the Indian, big Indian population. At independence, you know that a big population, almost about 80%, they were involved in agriculture. But then slowly over a period of time, this number was reduced ultimately, but still. So we have a population of 1.39 billion right now. And we know that after China, we are the most populous country in the world. And then by 2027, 2030, it is anticipated that we would be the most populous country in the world, leaving China behind. Another important thing about Indian agriculture is this, that we have 160 million hectares of arable land with us, in which is, after USA, after United States of America, it's again the biggest, in fact. Okay, 160 million hectare after America is the biggest in the world, in fact. And then we have in the country, fortunate that we have in the country 15 climates, that we have. And then of the 60 soil types, which exist, we have 46 on the Indian soils. So another important thing about Indian agriculture is this, that you see about 50% of its total geographical area is cultivated, which is the biggest user in the world. No other country in the world, has so much of arable area. Then Indian agriculture is one of the oldest systems in the world. It is very diverse. It is very heterogeneous. At the same time, it is unorganized. And then, for that matter, it always faces a number of vagaries. Well, can I request that to see, the other people should be muted up, because this is causing disturbance. Kindly mute your mics. It's a request to all. Kindly mute your mics. So agriculture remains, a critical sector for economy, in fact, of economy, for the sustainable and inclusive growth of the country. Even now, I mentioned to you that at independence and after that, soon after that, it was almost 80% population engaged in agriculture. But at this point of time, it's almost 50%. 49.6% precisely, is the workforce. And then it accounts for about 18.8% to the GDP. Okay? So, as I mentioned to you that Indian agriculture, began as early as 11,000 before present BP, with the domestication of animals and early cultivation of plants, as has been evidenced in the ancient literature. You can find in there.
Since the beginning of civilization, you see, the Indian agriculture has made tremendous progress. But then there has been periods in Indian history, when food shortages made serious impact on civilization. In the pre-independent India, agriculture was, you see, heavily dependent on climate, unfavorable monsoon, etc. Particularly the southwest monsoons, it, causes drought and, you see, crop failures. These droughts, at times when they were repeatedly occurring, they resulted in famines. And please mind that famines in India, it resulted in more than 30 million casualties. 30 million casualties, over the course of 18th century to the 19th century to the 20th century. Can imagine, how much we were dependent on these climatic conditions, and how overtly, it has affected Indian agriculture over a period of time. So, in the coexistence of, uncertainties of weather and declining soil health, increasing atmospheric temperature, and emergence of, more virulent pests, and of course pathogen, the science-led agriculture development, transformed India from an acutely food scarce and food shortage to food sufficient to food surplus nation, and then ultimately food exporting country. I hope you remember that a phrase that was coined for in agriculture, that was ship to mouth, We used to import food, through ships, and then it used to went into our mouths, So this is a sort of infamous, phrase that is coined to Indian agriculture, ship to mouth. But then, the overall food production, increased from 51 million tons in 1950-51 to over 314 million tons, in fact, in 2021-2022. The production of food grain increased over 6 times, please mind it. Horticulture crops by 11 times, fish by 18 times, milk by 10 times, and eggs by 53 times since 1950-51. This is, by all standards, no mean achievement. No mean achievement. And this has made a visible impact on the national and nutritional food security, Please know that India today is the largest producer of milk, pulses, jute, and second largest producer of rice, wheat, cotton, fruits, and vegetables in the world, on account of the active efforts and contribution of course, the policymakers, agriculture scientists, and of course, our farmers. India is also the leading producer of spices, fishes, poultry, livestock, and the plantation crop. This is, in spite of the fact that about 49% of the country's net cultivated area is rainfed. Please mind it. And is exposed to, biotic and abiotic stresses. Even the area in the command of those irrigation systems, falling exclusively in the rain-fed catchments, also experience, water stress in the event of deficient monsoon. Floods, especially in the eastern part of the country, been a regular feature. You hear every year, I'm sure. However, please note that amongst the few sectors, that made impressive progress during the past 75 years of India's independence, agriculture is confidently and most definitely the one. This has been proven time and again. When all the sectors, they fall short, agriculture came as the true savior. You know about the recent COVID-19 pandemic, and agriculture sector stands the best testimony, during this difficult time. You know that.
Well, in the past 1951, for which the data of agriculture production of majority of the food and food commodities are available, from authorized sources. We have been producing 135 million tons from agriculture and allied sectors. In 21-22, total production of food and non-food items, was about 1,300 million tons. This achievement is, one amongst the very few landmarks in the history of independent India. There have been so many fold increases in production of all the commodities, in spite of the net sown area remaining almost constant at about 140 million hectares. I say again, the net sown area, which was about 41 plus minus 2 million hectares, it has remained the same over a period of time, whereby you have seen these many increments, in the production of food and food commodities. Please mind that the country has witnessed a rainbow revolution in the agricultural commodities. Green, that is on account of crops, white on account of milk, blue on account of fish, yellow on account of oil, golden on account of horticulture and honey, silver on account of egg, brown on account of coffee, and gray on account of wool. It's almost a rainbow revolution, It is to be noted that, India is the second largest wheat producer in the world. Please realize, during 60s, when we used to import under PL 480 program, we used to import wheat grain from foreign nation to feed our nation. Now we are the second largest wheat producer in the world. A quantum jump in wheat production, during late 1960s, it laid a strong foundation for green revolution, that. And wheat served a pertinent role in the progress of the nation towards economic growth, as well as food and nutritional security. India achieved, more than a five-fold increase in the rice production over the past few decades. And please note that India is now the biggest rice exporter in the world. Please keep in mind, what I mentioned to you, that it was a ship-to-mouth situation, at one point of time. Now India is the largest rice exporter in the world, and shares about 90% of the basmati rice trade overseas market. This country, our country exported about 18 million tons of rice, earning almost 66,000 crore rupees in 2020 and 21. 66,000 crore rupees we earned through the export of basmati rice. You can be proud of this achievement, Then India houses the second largest gene bank in the world. The National Gene Bank at New Delhi, you know that it holds more than 450,000 indigenous and exotic accessions of cross species from across India and the world. Well, India now is one of the biggest agri producers globally, ranking within the top 5 countries in the world. These have enabled not only the self-sufficiency in food, but also export of agri commodities worth $50 billion. Please mind, I'm saying this is the time then when we export food and food commodities worth $50 billion annually. Production of most of the agriculture commodities has increased by 6 to 68 times, with only 1.3 times increase in the area. As I mentioned to that, 140 million hectares, it remained the same, almost the same, in fact, So all this increase from 6 to 68 times, has happened with only increase of area by 1.3 times, that's all.
Thus, a country, which was food scarce till 1950, transformed its food into food shortage by 1960, food sufficiency, by 20, that is 2000, food secured by 2010, and food surplus nation by 2010 onward. Of course, a blend of science, technology, extension, and policy, they have contributed in this journey of transforming the country from food scarce to food surplus nation. Well, the accomplishments are so numerous, and there are also, you see, newer challenges as well. The burgeoning population, of course, we are 139 at present, 1.39 billion right now. And then changing economies, they have raised the demand for very diversified quality food, while the primary production resources base is not only depleting, but also deteriorating. The cost of applied inputs, machines and labors, it has increased. That has adversely impacted the profitability. Consequently, the farming, at times it is absolutely not an attractive occupation, It's not an attractive income option, and it's not a very attractive profession, profession any longer, Added to it, the growth rate in productivity of many crops, has become stagnant, and they have further compounded the challenges posed by the changing climatic condition. It is to be noted that, please note that, the past strategy for development of agriculture sector, in India has focused primarily on raising agriculture output. Sir, and please Hindi speak. हिंदी बोले? हिंदी में बात Just करें? Okay. no understand to English, sir. Okay, so मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी बात सुनी है अभी आपने, इसमें आपने इस बात को नोट किया होगा, जो पीछे की स्ट्रेटजी हमारी रही है, जो पुरानी स्ट्रेटजी हमारी रही है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में, ज्यादा प्रोडक्शन करने में, इट हैज डिपेंडेड, ये जो है, जो देयर आर 4 थिंग, बेसिक पिलर्स रहे हैं, वो हमेशा 4 रहे हैं. देयर वर 4 एक्चुअली. एक क्या रहा है कि जो हमने हायर प्रोडक्टिविटी ली है, वो जो अच्छी टेक्नोलॉजी के जरिए आई है, बेटर वैरायटीज के जरिए आई है, अच्छे बीज के इस्तेमाल से आई है, फर्टिलाइजर के यूज से आई है, इरिगेशन का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, उससे आई है, एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, उससे आई है. नंबर 1. नंबर 2, दूसरे जो आई है वो जो है, जो आपके जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर हैं, जो हमने अपने किसानों को इंसेंटिव दिए हैं, फर्टिलाइजर में सब्सिडीज दिए हैं, और उनको जो है रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दिए हैं, जो इनपुट हैं, जो आपके फार्म इनपुट हैं, उसमें सब्सिडीज दी हैं, उसके जरिए आई है. नंबर 2. दूसरा जो है, तीसरी बात जो आई है, जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं एग्रीकल्चर में, उसके जरिए आई है. और नंबर 4 चीज है कि हमने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किया है. आपको मालूम है कि डीबी पंत यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 1960 में बनी थी. उसके बाद से बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनी है हमारे देश के अंदर. स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है, ऑलमोस्ट 75 अब उनका नंबर है. जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनका नंबर, टोटल नंबर 75 के करीब आजकल है. तो 75 यूनिवर्सिटीज में हमारे देश में बनाई गई हैं. तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसके जरिए भी हुआ है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस स्ट्रैटेजी से बहुत फायदा हुआ. हम फूड स्केर्स नेशन से हम एक्सेस फूड प्रोडक्शन में आ गए, और $50 बिलियन का फूड हम एक्सपोर्ट करने लग गए. ठीक हो गया. लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस स्ट्रैटेजी ने फूड प्रोडक्शन तो अच्छे से किया, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के जरिए जो हमारे किसान हैं, उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो पाई. ये एक बहुत दिक्कत रह गई कि उनको फायदा नहीं हो पाया. ऐसे केसेस हैं जहां पर जो अधिक उत्पादन से, अधिक पैदावार करने से जो किसानों को फायदा हुआ, लेकिन वो किसान बड़े किसान थे जिनको फायदा हुआ. लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे थे जिसमें उत्पाद ज्यादा करने से उनकी इनकम में इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो किसानों की इनकम जो है वो नीचे रही. और ये जो एविडेंट है, जो डेटा, ये जो NSSO का डेटा जो अवेलेबल है अभी हमारे पास 2011-12 का, वो ये दिखाता है कि 1/5
1/5 जो हमारी जो रूरल हाउस होल्ड है और जिनकी एग्रीकल्चर जिनके लिए प्रोफेशन है, वो लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये बहुत ही दुखदायक, बहुत ही ये अपसेट करने वाली बात है कि किसान जो हमारे लिए अन्न उपजाता है, पैदावार करता है, 1/5 of that population who have agriculture profession as their main occupation, they are below poverty line. और इसमें मैं आपको बता दूं कि झारखंड के जो किसान हैं, जो झारखंड जो हमारा जो स्टेट है, वो वर्स्ट इफेक्टिव है, जहां पर ऑलमोस्ट 46% जो हैं, 46% जो फार्म हाउस होल्ड हैं, वो जो है अंडर पॉवर्टी है। तो एक तरफ हम ये बात कह रहे हैं कि हम लोग जो है फूड में हमारे पास सफिशिएंसी है, एक्सेस फूड है, $50 बिलियन का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं फूड एंड फूड कमोडिटीज का, बट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम इनकम उनकी हमें उसमें हम राइज नहीं कर पाए। ये बड़ी दिक्कत की बात है और ये बड़ी पेनफुल बात हमेशा रहती है। तो इसलिए इनोवेशन ही एक चीज ऐसी है जो 1960 के दशक में इनोवेशन हमारे काम में आई, और इनोवेशन फिर इस स्टेज में जब हम खड़े हैं, फिर से एक पुराने हम लोग एक उसमें आ गए हैं कि जिसमें आपके पास चेंजिंग जो वेदर कंडीशन चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपके रिसोर्सेज घट रहे हैं, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है, और जमीन को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या करें? इनोवेशन इज द ओनली आंसर। इनोवेट आपको फिर से करना पड़ेगा। तो जो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं, जो मेजर टेक्नोलॉजी इस समय जो इनोवेशन की जब बात करते हैं और जो आपके जहन में आती हैं, वो फॉर एग्जांपल इंडोर वर्टिकल फार्मिंग, फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस प्रैक्टिसेस, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, इन सब टेक्नोलॉजी का समावेश जो है वो अब समय आ गया है कि हम एग्रीकल्चर में करें, और उसको हम जो हमको डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको हम एड्रेस करें। मैं बार बार कह चुका हूं ये बात कि इंडियन एग्रीकल्चर ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, और थ्रू फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, और इन सब के चलिए जो अभी हमारे पास बिगर चैलेंज आया था कोविड पेंडेमिक का, उस समय भी रेजिलियंस जो हमने मीट किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने मीट किया है, वो एक रिमार्केबल है। लेकिन जो कठिनाइयां हैं वो भी साथ साथ मैंने बताया आपको। प्रोडक्टिविटी हमारी, प्रोडक्शन भले बड़ा हो, प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत लो है। दूध में हम लोग वर्ल्ड के लीडर हैं, मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड के लीडर हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है, जो कितना प्रोडक्शन एक एनिमल देता है, उसके देखें तो बहुत कम है। राइस में, वीट में हम नंबर 2 प्रोड्यूसर हैं, राइस के बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं राइस के वर्ल्ड के अंदर, लेकिन प्रोडक्टिविटी देखें तो हम बहुत देशों से पीछे हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसकी वजह बहुत सारी हैं। हमारे देश के अंदर जो छोटे किसान हैं, जो आप स्मॉल होल्डर्स हैं, जिनकी स्कैटर्ड होल्डिंग भी है, इसके साथ साथ स्मॉल हैं, उनके साथ साथ स्कैटर्ड होल्डिंग भी है, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग भी है, उनकी बहुतायत है। उनकी बहुतायत धीरे धीरे ज्यादा होती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि जो वर्क फोर्स है, अब मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास इस अबाउट 49% पे हम लोग आ गए हैं, जो लोग जिनके लिए फार्मिंग एक ऑक्यूपेशन जिनके लिए 49% के करीब आ गए हैं। अब उसके लिए उसके लिए जो है उसके मद्देनजर मैकेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मैकेनाइजेशन फार्म में होना वो बहुत बहुत आवश्यक है। इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में और ज्यादा होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। और इसके बाद जो है दूसरी बात ये है कि हमारा जो अभी प्रेजेंटली ओवर प्रोडक्शन जो हो रहा है राइस में, वीट में, शुगर केन में, इसमें क्या हो गया कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन शुरू हो गया। बहुत केसेस, बहुत जगह ऐसे देखने को मिल रही हैं आपको जहां वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। ऊधम सिंह नगर में मैं बहुत साल रहा हूँ, 40 साल में रहा हूँ, जहां पर पहले आर्टिजन हुआ करते थे ऊधम सिंह नगर में, अब वहां वाटर टेबल जो है 200 फीट 300 फीट नीचे चला गया है। बहुत सारे किसानों ने राइस की जगह दूसरी क्रॉप लेनी शुरू कर दिया वहां पर, और उसको 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 जो है हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट डिस्करेज भी करती हैं, लेकिन ये भी वजह है। तीसरी बात ये है कि जो हमारा बावजूद इसके कि हम लोग एक्सेस प्रोडक्शन करते हैं बहुत सारी कमोडिटीज का, फूड इन्फ्लेशन और volatility in prices, it has really continued to remain very high actually,
एंड उसकी वजह से हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको बड़ी इनकन्वीनियंस है और जो इनकम फार्मर्स की है दैट हैव बीन फ्लक्चुएटिंग ऑल द टाइम। इसलिए जो है जो एम्पिरिकल एनालिसिस लोगों ने करे हैं उसके जो रिजल्ट उन्होंने पब्लिश करे हैं, उन्होंने बताया है कि जो हमारी जो फूड चेन जो हिंड्रेंसेस हैं वो उसमें बड़ी दिक्कतें हैं, उसमें जो है जो इन्वेस्टमेंट जो है वो लो है, इनएडिक्वेट जो है कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे पास, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी बड़ी जो अर्ली स्टेज में है, अर्ली फेज में है, और ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं हम लोगों को। सो इन सब चीजों को एड्रेस करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये लेकिन आवश्यक भी है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इनके सबके रिड्रेसल के लिए बायोटेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो हमारे लिए डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी, इको फ्रेंडली, रेजिलियंस टू क्लाइमेटिक कंडीशन, मोर न्यूट्रिशियस, बाकी जो है वैरायटीज का इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। वाइडर यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज ये भी बहुत हेल्पफुल है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए और जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द फार्मिंग कम्युनिटी। उसके साथ साथ जो है जो आपकी बेटर आपकी जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हार्वेस्टिंग के बाद जो है पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान बहुत ज्यादा होता है हमारी फसलों का, उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो जो हार्वेस्टिंग के बाद मैनेजमेंट जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं वो उसको हमको मजबूत करना पड़ेगा, इट हैज टू बी स्ट्रेंथेंड नाउ। एंड देन उसके बाद a revamping of the cooperative movements through formation of FPOs, farmer producer organization, ये भी जरूरी है। It can arrest volatility in the food prices and farmers income, and it can help farmers harness the true potential of the Indian agriculture. Well, हमारे जो ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इनोवेशन के बारे में आपको बताया, चैलेंज के बारे में मैंने आपको बताया। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम एनकाउंटर करते हैं डिफरेंट चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कुछ मैंने बताए भी हैं, कुछ और भी हैं। लेकिन एक चैलेंज जो है वो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्वालिफाइड मैन पावर, एग्रीकल्चर की क्वालिफाइड मैन पावर की डेफिशिएंसी है। देयर इज अ बिग गैप इन डिमांड एंड सप्लाई, और क्योंकि बिग गैप की वजह से जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए मैन पावर हमारे पास नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दैट मैटर आई वुड वांट टू से दैट एग्रीकल्चर एजुकेशन इट इज अ बेसिक फाउंडेशन for developing manpower for research, education, training, and extension. And also please note that agriculture is a growing sector in the present time, and it's a field of opportunities. Agriculture sector बहुत opportunities आपको देता है. In fact, this is the only sector that can reduce poverty better than any other sector due to the use of innovation and technology. यही एक सेक्टर है जो गरीबी को किसी दूसरे सेक्टर से अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसको एनकाउंटर कर सकता है, हटा सकता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आप ये कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल आज के दिन में हैं। इसलिए मैं इस पे एम्फसाइज करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और जो डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स का, पोस्ट ग्रेजुएट्स का, उसको ब्रिंग डाउन करने की आवश्यकता है। In the recent times, with the emergence of recent concepts like precision agriculture, these things, these technologies, they are playing a decisive role in this agriculture sector. Therefore, studying agriculture will really help, entrepreneurs achieve a competitive edge, very faster. Being a part of the agriculture value chain or agri value chain, it can bring, immense benefit to the farmers, offering them good access to the quality seeds, better irrigation system, fertilizer, farm tools, equipment, just to mention a few, मैं समझता हूं कि आपको मालूम ही होगा कि पिछले
2019 तक मेरे पास इंफॉर्मेशन डेटा है कि 450 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स जो हैं वो यहाँ पर शुरू हुए हैं अंटिल 2019, और जिनकी वैल्यू है 248 मिलियन डॉलर्स। 240 मिलियन डॉलर्स के एग्री स्टार्टअप्स जो हैं 2019 तक शुरू हुए हैं। और इसमें जो 4 मेजर एरियाज ऑफ जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स के हैं वो हैं डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल, इरिगेशन, हेल्थ ऑफ सॉइल, एरियल सर्वे टू डिटेक्ट एनॉमलीज, एंड फूड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये इस पे बहुत फोकस रहा है रिसेंट टाइम्स में। तो जो लोग अभी थोड़े हेजिटेंट हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशन को अपनाने में, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज अ प्रॉमिसिंग वेरी अपकमिंग सेक्टर। वेल, अंत में मैं ये बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि पिछले 75 सालों के अंदर, इन द पास्ट 75 years, हम 75 साल इंडिपेंडेंस के मना रहे हैं। And I would like to reiterate once again that, in the past 75 years of Indian independence and all, there could be so many achievements that we can be proud of. Well, we are not an achievement, definitely, But then, many of these achievements, would have been very difficult to achieve or impossible to achieve without the single most spectacular success of independent India, and that is gaining food sufficiency. In my opinion, this is the most important success of independence India. So with this, I would want to say thank you so much. मेरी बात कितनी समय में आपको आई है, I don't know. Half of this I spoke in English. अगर आपको समय में आई तो बहुत अच्छा है. But then I think, कुछ बात जो समय में आई होगी, that would really help you. Thank you so much. हेलो सर, Thank you very much. सर मुझे आपसे क्वेश्चंस हैं। Please tell me. सर बोल रहा था कि आज के मतलब कि मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स की है या केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की है? आज के मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड ऑर्गेनिक की है कि केमिकल फर्टिलाइजर, ये आप कह रहे हैं? यस सर। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अपकमिंग। इसमें ये जो अपकमिंग एक है, और ये एक अपकमिंग एक ऑप्शन है किसानों के लिए जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, बिकॉज ऑफ द प्रीमियम प्राइस विद विच यू हैव टू परचेज दिस, एक छोटा ग्रुप है अभी हमारे देश में जो इसको अफोर्ड कर सकता है प्रेजेंटली। लेकिन यस, डेफिनेटली, आई मीन, आई एम नॉट सेइंग टू यू कि हमारे पूरे किसान, देश के किसान जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने की स्थिति में है। मैं आपसे नहीं कह रहा ये बात, बट यस डेफिनेटली जो इसको उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ला सकते हैं, वो जरूर करें, बिकॉज दे विल गेट ए प्रीमियम प्राइस फॉर दिस। एंड there's a group of Indian population who can afford the organic produce, और उनके लिए बहुत अच्छा है। But then you see, but then again, I'm saying you again, feeding a population of 1.4 billion, 139 करोड़ पॉपुलेशन को फीड करने के लिए आई थिंक जो हमारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हमारे पास हैं, उसको एक्सरसाइज किया जाए तो बेहतर होगा। Sir, good evening. Sorry interrupting you. Myself, Shapil Pandey. Sir, I'm asking right now there is a scenario of the organic farming. How we can justify, because a lot of the company work of the organic farming. But sir, in the organic farming, a lot of the companies like that chemicals and biochemicals is also including this. So how we can justify this organic chemicals or something? So how we can explaining about in front of the farmers, you do the organic farming and it's a very beneficial for you. Well, you see, as I mentioned to you already, well, organic produce, it fetches premium price, you know that. I mentioned to you already. So, well, I'm not sort of advocating that, the entire Indian farming community, they have to start doing organic agriculture. I'm not saying that, I'm just saying to you this thing that those people, usually, for organic agriculture, we are saying, the resources which are available on the field, on the farm, they can use those resources for doing organic farming, organic agriculture.
बट देन एट द सेम टाइम आई एम आल्सो नॉट रिकमेंडिंग टू यू दैट सी कि अगर आपने जो है अगर खेत में गोबर डाल दिया तो इसका अर्थ ये है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, इसका अर्थ ये भी नहीं है। Organic farming is a science actually. See, as we have evolved over a period of time, जो हमारी दूसरी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को हमने इवॉल्व किया है पिछले 50-60 साल में किया है हमने, उसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को भी इवॉल्व करने की जरूरत है। इट्स नॉट ओनली दैट कि खेत में गोबर डालने से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो जाता है, नंबर वन थिंग। Number two thing, I am also saying to you with a word of caution that is, to feed a population of 1.3, 1.4 billion people in this world, in this country, it may not be a viable or a feasible option or a workable solution, to go for organic farming. Yes, the तीसरी बात मैंने ये कही कि there is a group of, Indian population, who can afford, organic produce, organic product, they can do that. For them, it is good. So for all those farmers who are doing that, they have a market, they can do that. लेकिन आप ये देखें कि अभी what is the proportion of farmers who are involved in organic farming? It's very small. It's very, very small rather. सर फार्मर्स तक ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए नहीं पहुंच पा रही कि उनमें अवेयरनेस नहीं है, या इसलिए कि बायो फर्टिलाइजर्स का डिमांड मार्केट में बहुत कॉस्टली है? ये दोनों ही चीजें हैं, मेरे ख्याल से दोनों ही चीजें हैं। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये समझ लेते हैं कि जो उनकी पिछली जो फार्मिंग है, जो पुराने समय से फार्मिंग करते आ रहे हैं, हम उसको जो है ऑर्गेनिक मान लेते हैं और हम वो कहते हैं कि जो आप करते आ रहे हैं वही ऑर्गेनिक है। मेरे ख्याल से वो बात सही नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट ऑल्सो। दूसरी बात ये है कि यस, अवेयरनेस की भी मैं बात आपकी मान सकता हूँ, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इनपुट की रिक्वायरमेंट्स है, वो भी एक इशू बिल्कुल डेफिनेटली वो भी एक इशू अवेलेबल है, वो भी अभी उनके पास एक्सेस टू दोस थिंग्स स्टिल नॉट देयर, दैट इज आल्सो देयर, बट इट विल टेक सम टाइम। ये अभी हम लोग बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर हैं, जो हमारी एज ओल्ड हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, उसकी बात भी कर रहे हैं हम लोग, जीरो बजट फार्मिंग की बात भी कर रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात भी कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कर रहे हैं। बट देन कीप इन माइंड, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन एंड अगेन, कीप इन माइंड कि जो एस्केलेशन इन पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हमेशा के लिए, दैट हैज टू बी सीन। एंड ऑफ कोर्स जो आपका ये जो इंडिकेशन है, वो मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर हैज टू बी सस्टेनेबल, दैट इज इंपॉर्टेंट, और उसके लिए वी हैव टू इनोवेट इस फैक्ट newer tools and technology in order that agriculture remains sustainable. सर ऐसा कहा जाता है कि स्मॉल एरिया ऑफ लैंड पर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा टेक्निक है जिससे कि स्मॉल एरिया ऑफ लैंड पर भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को सक्सेसफुल कर सके? देखिए एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर आपकी जो है वो रेमुनरेटिव होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि हमारे फार्मर्स की इनकम जो है वो, even though we were able to produce enough for everyone and also for the world also, हमारे किसान जो हैं अभी भी बीपीएल हैं, मतलब इट्स ए बिग चंक ऑफ द फार्मर बीपीएल। तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस आप जब तक रेमुनरेटिव नहीं करेंगे, छोटे एरिया में खेती कराएंगे तो किसान के लिए रेमुनरेटिव कैसे होगा बताओ। अब हम छोटे एरिया के लिए तो हम बात कर रहे हैं कि आपके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, कि जिन किसानों जिन फार्मर के पास छोटा एरिया है वो लोग जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, उसमें जो है एक ही किसी चीज को फोकस ना करें, rather than they also include, you see, horticulture also, they include fisheries also, they include agroforestry also, floriculture also. So these things you have to be included, Keep in mind, मैंने आपसे पहले कहा कि in India preponderance of small farmers is increasing, it's on the increase always, So tools and technologies उन्हीं के लिए बनानी पड़ेंगी जो उनके लिए beneficial हैं, in order that they can produce also at one hand, at the same time they get remuneration also at the same time. Good evening, sir. My name is Rishabh Mishra. Sir, my question is, what should be the what should be the suitable initiatives so that farmer can easily adopt the organic farming? देखिए इनिशिएटिव तो अगर आप पीछे से चलें 1960 के बाद चलें तो व्हाट वाज इनिशिएटिव? इनिशिएटिव ये था कि यू इनोवेट एंड देन द टेक्नोलॉजी हैज टू बी डिसेमिनेटेड। दिस वाज इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी अगर आपके पास पड़ी रहेगी, अगर आपके शोरूम में रखी रहेगी तो कोई फायदा नहीं है, अनलेस इट इज डिसेमिनेटेड।
तो वही वही चीज यहाँ अप्लाई करनी है। कोई भी नया इनोवेशन अगर आपको उसका जो है अडेप्टेशन कराना है फार्मर एंड में, देन इट हैज टू बी डिसएनिमेटेड। अभी अभी हम पिछले 50 सालों में वी आर इन अ बेटर स्टेट राइट नाउ कि आईसीटीज का अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है। आपको मालूम है कि अब जो है आईसीटी के टूल्स बहुत सारा बन गए हैं। अब आपके पास गूगल आपके हाथ में है, व्हाट्सएप आपके हाथ में है, इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली यू कैन कन्वे इंफॉर्मेशन टू द फार्मिंग कम्युनिटी। तो इन ये जो आईसीटी टूल्स का आप जो है एडवांटेज ज्यादा लेके और जो इनोवेशंस हैं उसको जो है फार्मर तक पहुंचाया जाए, दिस इज द ओनली वे दैट कम्स टू माय माइंड। But Okay, sometimes just 1 innovations minute. are not budget friendly, sir, for farmers. Sorry for interruption. Just put your question in the chat box. We will try to resolve at the end of the event. Okay. Just ask your Okay, ma'am. question in the chat Thank you, box. sir. Okay, we will answer it at the end of the event. Thank you so much, Jay Kumar sir. Okay. Listening to you is always a pleasure, sir. It's Thank you so wonderful how much. you covered the journey of agriculture from independence to now in terms of production economic aspects and explained the reason of progress. You have also highlighted that why small farmers are not getting due benefits and the need of our is novel agricultural systems. So proceeding towards the program, I would like to invite Kusum Farswan to take the program ahead. Okay, thank you, ma'am. Moving forward, our next guest speaker, Dr. Prabhat Kumar, Central Horticulture Commissioner, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. I would like to invite him. Before that, I would like to give a brief description about him. Dr. Prabhat Kumar has earned his BSc Agriculture Honours from CSA University of Agriculture and Technology, Kanpur, then his Masters in Floriculture and Landscaping from Punjab Agriculture University, Ludhiana, and PhD in Horticulture, specialization in Floriculture and Landscaping from IARI, New Delhi. He has 15 years of experience in teaching, research, and extension. He worked as an assistant professor for 8 years, 10 months in GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand, and associate professor in horticulture in HNB Garhwal University, Srinagar. He then worked as a senior scientist, floriculture and landscaping division at IARI, Pusa, New Delhi, and later appointed as principal scientist. He has identified and released Pusa Deep and Pusa Bahar varieties of marigold and Pusa Sinduri variety of gladulus. Also, he has standardized package and practices for gladulus. He has guided masters and PhD students as an advisor and also guided international students in Maldives. He has handled 14 projects, conducted many trainings, exhibitions, radio talks, and visited many countries like Netherlands, Singapore, Maldives, Thailand. Dr. Kumar has authored 50 research papers in national and international journals of high standard, 4 books, and many other publications. He is the editor of Journal of Scientific and Applied Research, Annals of Horticulture, referred editor of Journal of Ornamental Horticulture, and member of editorial board of Progressive Horticulture. He has been awarded as Fellow, Indian Society of Horticulture Research and Development, Indian Society of Ornamental Horticulture, and Confederation of Horticulture Association of India. Also, he was awarded with Dr. Ambedkar Young Fellow Award by Scientific and Applied Research Center, Meerut, and Himadri Young Scientist Award by Indian Society for Horticulture Research and Development. Now, I would like to invite Prabhat Kumar, sir. Yes, Sir, thank you. Thank the you very platform much. is yours, sir. Yeah. Thank you very much, Kusum, for a very, elaborative introduction and a very kind word. और मैं शिवराम ने लिखा था कि हिंदी में बोलिए, तो मैंने देखा है, आई हैव इन द चैट बॉक्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में बोलूंगा, कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग फॉर। जी सर, ठीक है शिवाम। तो अभी जैसा कि आपने डॉक्टर जय कुमार जी को सुना, जर्नी फुल ऑफ अचीवमेंट, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे जर्नी रही, लेकिन चूंकि यहाँ पे युवा जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं अनिल चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें अपने विचारों को लोग रख सकें, अपने अनुभवों को साझा कर सकें।
दूसरा, हमारे जो विद्यार्थी हैं जो इतने जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ 290 के करीब जुड़े हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि अभी भी लोगों में ज्ञान पिपासा है और लोग चाहते हैं कि कुछ ज्ञान प्राप्त हो। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आयोजकों को भी देता हूँ। जिस तरह उन्होंने जर्नी को बताया, जर्नी बड़ी पिंकिश है, बड़ी गुलाबी है, लेकिन उस जर्नी के अपने कुछ, जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के कष्ट भी होते हैं। अब जो आप लोग, जैसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैं देख रहा था, मैं ज्वाइन कर लिया था पहले से, तो उनके प्रश्न के उत्तर भी देने की कोशिश करूंगा। और एग्रीकल्चर को जैसा कि एक पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, तो हम लोगों के लिए हम एक कंट्री नहीं, हम एक कॉन्टिनेंट है। तो हमें ये सोचना है कि जो सबसे पहली अपनी जिम्मेदारी हो वो है फूड सिक्योरिटी की। तो फूड सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फ्रंटियर सिक्योरिटी। इट वाज वेल सेड बाय लेट एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था जब हम लोग यहाँ स्टूडेंट थे पीएचडी के, तो स्टिल आई रिमेम्बर कि जो फ्रंटियर सिक्योरिटी है उससे ज्यादा होती है हमारी फूड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी होने से अमन चैन होता है, इंटरनल कोई रेजनमेंट नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती है, लोग आराम से खाना खाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। कोई कंट्री जब कहीं से फूड लेके खाती है तो उसका जो आत्मसम्मान होता है, जैसे आप भोजन अपना अगर आप स्वयं आपको मिल जाए, चाहे वो आपकी आय से मिले चाहे पैदा है, तो जो आत्मसम्मान का बोध होता है वो बहुत जरूरी है आदमी के अंदर। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आदमी से ही समाज बनता है और समाज जब मिल जाता है तो एक राष्ट्र बन जाता है। तो राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की जैसी गौरव की बात, जो कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, सरकार की नीतियों से, जो दोनों के और हमारे किसान भाइयों की बड़ी मेहनत से, अगर आप देखें तो एक त्रिभुज है, इन त्रिभुज के आधार पर इनको प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी लेडन ग्रोथ की बात हुई, एरिया एक्सपेंशन की ग्रोथ की बात हुई। जब एरिया एक्सपेंशन हुआ ही नहीं, everybody is saying that area expansion has not taken place, it means the productivity laden growth took place। तो आप चूंकि विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इतना ही समझना है कि उत्पादकता में बढ़ाव हुआ है। अब बात आती है कि उत्पादकता का ग्लोबल इंडाइसेस क्या है। इसमें भी बहुत डिबेट है, बहुत लोग इसको नहीं बोलते हैं। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप इसको सर्च करो। ग्लोबल इंडाइसिस में भी हमें बहुत ज्यादा फंसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्रॉप हैं जिनकी मेच्योरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, बाहर जाएंगे। अब इमर व्हीट की बात ले लीजिए, 6 महीना व्हीट ही लगा हुआ है। हम लोग गए नीदरलैंड में, देखे कब सोइंग टाइम है, कब हार्वेस्टिंग टाइम है। तो जब आप ज्यादा समय दोगे तो प्रोडक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अब पर डे प्रोडक्टिविटी की अगर आप बात करोगे तो माई प्रोडक्ट पर डे प्रोडक्टिविटी इज हाई इन द व्हीट। हाउ कैन बी से दैट वी आर बिलो द बेंचमार्क? तो कुछ क्रॉपों में हमारी बेंचमार्क से अलग है, कुछ में हमारी कैलकुलेशन गलत है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने को अप्रिसिएट करना सीखना चाहिए कि यू अप्रिसिएट योरसेल्फ। और एग्रीकल्चरल एजुकेशन, जैसा कि अभी बात हुई, एग्रीकल्चर एजुकेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग, प्रोडक्शन इज ट्रांसफॉर्मिंग। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप विनोबा भावे को देखते हैं तो उन्होंने सर्वोदय इकोनॉमिक्स में लिखा था, उन्होंने कहा था कि अगर देश विकसित राष्ट्र की धारा में आना चाहता है तो वी हैव टू रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम द एग्रीकल्चर। कब की लिखी बात है? 1960 की लिखी बात है। कितनी बड़ी बात थी। तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्शन बेस्ड है वो हमारा अभी हो जाना चाहिए ट्रेड बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए। तो जो नई क्रांति आनी है वो क्रांति आनी है ट्रेड बेस से आनी है। तो ट्रेड बेस में क्या करना पड़ेगा? ट्रेड बेस में आपको लिंकिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन सेंटर पे प्रोसेसिंग सेंटर को लगाना और वैल्यू एडिशन करते हुए ट्रेड की तरफ जाना। तो भारत देश के अगर इतिहास में आप जाएंगे तो आपको कभी भी, ये कृषि प्रधान देश की जो बात हुई, कृषि प्रधान नहीं था, ये वाणिज्य प्रधान देश था। तो वाणिज्य प्रधान क्या होता है? ट्रेड बेस्ड। अब आप एग्रीकल्चर को देखिए तो नाउ अनदर रिवोल्यूशन इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज अ मार्केटिंग रिवोल्यूशन। और हम क्या कह रहे हैं? प्राइस रियलाइजेशन टू द फार्मर, नंबर 1। नंबर 2, एडिंग वैल्यू। व्हाई टू एक्सपोर्ट रा? क्या जरूरत है रा भेजने की? इस पे विचार करने की जरूरत है। तो अगर हमें ये देखना है कि हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है उसको देखना है, अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है, 2050 तक हमारी क्या पॉपुलेशन होने जा रही है। डाटा बहुत बोला गया, प्रीवियस स्पीकर ने बोला, तो आई एम नॉट गोइंग टू बिगाड़। डेटा जो होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा स्टैटिकल हैवी हो जाता है,
कि बार बार उसी चीजों को बोलना। तो हमें देखना है कि अगर इस तरीके से सोचेंगे कि इतना जाएगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप देखें तो डिपेंडेंसी ओवर एग्रीकल्चर कम नहीं हुई। अगर हम जीडीपी में रोल कहते हैं तो जीडीपी में रोल हमारा कम होता गया, लेकिन जो हमारा डिपेंडेंसी था, इसीलिए वो जो फर्क दिखता है। तो रूरल इकोनॉमी में भी क्या जरूरत है, दूसरे पार्ट से इकोनॉमी आने की जरूरत है। दूसरी बात, हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मोर देन 80% हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर, लघु और सीमांत किसान है। अब इनके बारे में आप चिंता कीजिए कि इनको कैसे हम, इनके जो उत्पादन है, तो आप पाएंगे इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स ये हैं कि हमेशा हमको एक बड़े उन राष्ट्रों की तरफ नहीं देखना चाहिए जहां लैंड होल्डिंग बड़ी है, उनकी क्या कैपेसिटी है, कैसे करते हैं। तो इसका एग्जांपल आपको दूंगा, वियतनाम इज द बेस्ट एग्जांपल, मोरक्को इज द बेस्ट एग्जांपल, थाईलैंड, सिंगापुर इज द बेस्ट एग्जांपल। आप इनको पढ़ेंगे, इवन चाइना इज हैविंग लेस लैंड होल्डिंग, अपने आसपास ही है उनकी। तो हम क्या करना है, इनको हमें देखना है। इनको देखने के बाद देखना है कि व्हाट मैकेनिज्म इन्होंने लाया। तो आपने देखा कि भारत सरकार ने एक 10,000 एफपीओ की योजना लाई। वो एफपीओ है क्या? एफपीओ बेसिकली कुछ नहीं है। एफपीओ आपके देखा जाए तो जुड़ के काम करने की, जो कि हमारे यहाँ पहले से भी परंपरा रही है, जुड़ के काम करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से आप कैसे फायदा कैसे पाते हैं, आपकी निगोशिएशन पावर इंक्रीज होती है। हाउ टू इंक्रीज योर निगोशिएशन पावर। तो आपका क्या होता है, इनपुट निगोशिएशन पावर। जब आप जाएंगे, आप जब बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका कैसे करते हैं, इनपुट निगोशिएशन पावर आपका बढ़ जाता है। तो आप 300 लोगों के लिए, 500 लोगों के लिए जो इनपुट लेना है, वो कंपनी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं कास्ट को। दूसरा क्या है कि दूसरा, जैसे ही आपने आउटपुट जब आपका आया, तो उसमें क्या है, जो प्रोडक्शन हुआ, चूंकि आपने पैकेज प्रैक्टिसेस सेम लगाई थी, वैरायटी सेम थी, लगाने का समय सेम था, तो आपके पास जो उत्पाद आया वो भी एक समान रूप का हुआ, मतलब एक जैसा आया। तो उसमें क्या होता है, जब एक जैसा आ गया तो आपको एक निगोशिएशन पावर यू डेवलप टू द बायर्स। अब आप बायर से निगोशिएशन कर सकते हो। और जब आपके पास एग्रीगेशन फैसिलिटी हो गई, तो इमीडिएटली आपको क्या करते हैं, आपके पास पावर ऑफ प्रोसेसिंग, जो हम बात कर रहे थे, वैल्यू एडिशन की आ गई। जब माल ही आपके पास एक जगह नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे, इसलिए वो पावर आ गया। तो हमें एग्रीकल्चर में अभी जैसे बात आती है कि जैसे आपने देखा अमूलाइजेशन की बात सोचनी है। जैसे अमूल से इकट्ठा, अमूल ने एक मॉडल बनाया, वैसे ही अभी हमारे जिस एफपीओ के माध्यम से, जो कि एक क्रांति धीरे 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 आ रही है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, सक्सेसफुल रोल मॉडल्स हैं। मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी ऐसी बात प्रेजेंटेशन करें तो रोल मॉडल्स को भी ले आए, जिससे कि हमारे विद्यार्थी उनको देख के मोटिवेट हों। तो अभी हम लोगों ने 300 एग्री स्टार्टअप जो सक्सेसफुल है, हमने उनका डिस्प्ले यहाँ पे कराया, आईआरआई में किया। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले किया, उसमें से 27 जो हमारे स्टार्टअप थे, उनको हमने मेन थीम में लाके दिया था, और उनको टेक्नोलॉजी, जैसा कि अभी बात हो रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मोस्टली अगर आप स्टार्टअप को देखेंगे और स्टडी करेंगे, तो सर्विस सेक्टर में नहीं है, बेसिकली वो कलेक्शन और एग्रीगेशन का काम कर रहे हैं। तो हमें भी जरूरत है तीनों सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में भी काम करें, इनपुट सेक्टर में काम करें। केवल प्रोडक्शन लेवल पे नहीं काम करना है कि वो किसान प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ले लिया और उसको सेल कर दिया, वो नहीं है। अभी टोटल कंप्लीट वैल्यू चेन की बात करनी है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, और जो लोग, तो आपको फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में HLEG बनाया, हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप, जिसके स्टेक होल्डर्स बहुत अच्छा है कि उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और हमारे जो बिजनेसमैन है तो भी हैं। वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा वो डॉक्यूमेंट। अब उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, कितना बढ़िया दिया हुआ कि हमारी लाइट हाउसेस क्रॉप आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, नीस एरिया पे काम करना चाहिए कि भारत देश की शक्ति किसमें है, उस शक्ति पे काम करने की जरूरत है, और उससे हमारी अर्निंग को बढ़ाने की जरूरत है। तो उन्होंने लाइट हाउस क्राफ्ट्स की बात की, जिसमें हमारी लाइट हाउस क्राफ्ट। दूसरा क्या है कि अब समय है कंप्लीट वैल्यू चेन की बात करने की। तो जो विद्यार्थी बढ़ रहा है या जो भी पढ़ रहा है, आप उसको ये पढ़िए कि कंप्लीट वैल्यू चेन क्या है। अब ये नहीं होगा कि केवल आपने नर्सरी की बात कर ली
आपने प्लांटिंग की बात कर ली, प्रोडक्शन की बात कर ली, IPM INM, बट टोटल कंप्लीट वैल्यू चेन की बात करना है। इसलिए अभी हम लोगों ने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब मिनिस्ट्री ने एक CDP प्रोग्राम लॉन्च किया। उसमें हमने 55 क्लस्टर्स जो कि हम एक कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने उस क्लस्टर में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और एक मॉडल के रूप में बनाना चाह रहे हैं कि कैसे दिखाया जाए कि हमारी वैल्यू एडिशन हर चेन पे हो रही है जिससे कि उनको पैसा मिले। दूसरा है, जैसा मशीनीकरण की बात हुई, पीछे भी बात हुई, उन्होंने कहा मशीनीकरण में क्या है कि जब मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है तो हमें ये देखना है अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मशीन। अब उस अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मशीन की जब आप बात करोगे तो एवरीबॉडी शुड नॉट परचेज, क्योंकि पास्ट में हुआ है कि सभी आदमी ट्रैक्टर खरीदने लगे, हम लोग भी गांव के हैं, तो हमने देखा कि नहीं उनके ट्रैक्टर आ गया, मेरे भी ट्रैक्टर आ गया, तो क्या हुआ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। कैपिटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दी। थर्ड क्या हुआ कि रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द लोन वाज रिड्यूस्ड। तो आप लोग भी अगर गांव से होंगे तो गांव में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो बहुत लोग ये ट्रैक्टर आपको खड़े मिलेंगे, अंडर यूटिलाइज मिलेंगे। और वो क्या हुआ कि उन्होंने देख के मशीन को ले आए, और बाद में क्या हुआ कि उनकी जो लैंड थी, जो मॉर्टगेज थी, उस पर